हिपोक्रेसी किसे कहते हैं ये आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। ट्रूडो को तो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया, इस वीडियो में पता चल जाएगा। ट्रूडो को तो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है यहाँ पर कंजर्वेटिव लीडर के द्वारा। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने प्राइवेट में इनसे बात नहीं की, लेकिन सीधे पब्लिक में जाकर अनाप शनाप बक दिया। और सबसे शॉकिंग बात तो उन्होंने एंड में कही। उन्होंने बताया कि बीजिंग में 2 कैनेडियन सिटीजन्स को हॉस्टेज बनाकर रखा था और यही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला चाइना के खिलाफ, और भारत पे ये इतना आक्रोश दिखा रहा है। अब खुद ही देखिए ये पूरा वीडियो। On the issue of India, does Canada need to change its relationship with India in light of the intelligence the Prime Minister shared yesterday? I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. Response? They just expelled an Indian diplomat. Should they do more in response to this news? I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. What is the risk if he doesn't provide more information or these allegations are found somehow to be untrue or uncredible? Real. Well, what specific information, what specific facts do you think Canadians and yourself need to know in this situation? We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. Do you agree with the government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? Sorry, I didn't hear you. Do you agree with the government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? I would have to have more evidence to make a judgment on that. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took in that case. Êtes-vous favorable à financer un programme national et universel d'assurance médicaments? Il faut reconnaître que Justin Trudeau n'est même pas capable de livrer un passeport. On n'a pas confiance dans un gouvernement incompétent de Justin Trudeau. खैर अब तो इस वीडियो के बाद सच में देखकर लग रहा है कि भारत के साथ पंगा लेकर जस्टिन ट्रूडो ने अपने पैर पर एक काफी गंदी वाली कुल्हाड़ी मारी है और इनके एलाइज भी इनसे सेपरेट हो चुके हैं। खैर आपकी क्या राय है इसके बारे में? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।